Hello everybody and welcome to my UK immigration show. So this show has been created for those people who want to join their spouse, their British spouse, their spouse with settled status in the UK and spouse with humanitarian protection or status with refugee status in the United Kingdom. So specifically for those people who are a member in my private UK immigration group in Facebook Live, as well as on YouTube channel in the name of UK immigration. You will also find useful contents and free contents on my Instagram live Barrister Shazia Anjum official account. So welcome to this page, and I welcome all of my friends, members and subscribers, and I always endeavor to give free information to all my friends and subscribers, also members of UK immigration group. It's me, Barrister Shazia Anjum, and I have been helping many people to achieve their goals in their UK immigration. And my purpose is to bring families together so that they can be united with their children, with their spouse, and also with their close family members. So here you go. You can also ask any live questions, comments, enquiries in this show, because this is going to be live, and I'm going to share with you spouse visa UK 2020 and possibly in 2021 as well. So this spouse visa is for those people whose spouse or sponsor is with the disability allowances, carers allowances and personal independent payment allowances. I'm going to share with you the process of the application, which documents will be enclosed, what specified evidence will be enclosed with your application, also what does adequate maintenance means, because sometimes if you cannot meet a threshold of a financial requirement, then there are other possible way how you can claim exemption. In immigration rules, you will find some ways or maybe many ways where you can claim financial exemption of £18,600. Let me tell you first of all, basically there is a requirement of £18,600 income requirement if somebody wants to come and join their spouse or their partner in the United Kingdom. But sometimes people with a disability allowance, people with carers allowance and people with the independent payment allowance will be exempted to meet that requirement, and they can come to join their family member in the United Kingdom without showing any income or without showing any self-employed income or any saving. However, they will need to show some maintenance, and what does that mean I will also explain you in my video. If you watch this video till the end, you will find the contents I have created for you people to understand what does adequate maintenance mean, and also what does exemptions mean, and how can you claim that, what documents will you enclose if you want to come to the United Kingdom under that exemption. So I'm creating this video in two languages. One is going to be English, the other one is going to be Urdu, so that many audience who have joined me from other countries, they are able to understand these contents as well. You will see the contents in English I have created. Sometime if I talk in Urdu, you will be able to see the contents in English on the screen. So let's have a look first of all who have joined us live. And if they have any question, we will also answer their question in my live show. So I hope you've had a very good time in this Christmas time, and you will be having very good Christmas in this December. Even though there is coronavirus, but still there are many activities, many events to join, and then you can also enjoy your life with your children. There will be specific places where you can go and enjoy. Okay, so first of all, let's have a look at the requirement. What does spouse mean in terms of
what's carer's allowance actually? First of all, let me tell you what's carer's allowance. Carer's allowance is when British spouse in the United Kingdom, they are unable to work and they cannot work due to the reason that they are receiving carer's allowance. Because if people are receiving carer's allowance, then they do not have to show £18,600 income. And carer's allowance you can apply on the government website in the United Kingdom. If you feel that you need carer's allowance, you will go to check the eligibility criteria and process of the application onto government website www.gov.uk. So when you go onto that website, in the search box you will be able to type carer's allowance application, and then you will see lots of information how can you claim carer's allowance. Once your application is processed by DWP department and you start receiving your payment as a carer's allowance, then you are eligible to call your spouse from outside the United Kingdom without meeting £18,600 requirement. How to claim carer's allowance, I have already explained you. You need to go to the website www.gov.uk, type in carer's allowance, and then you will be able to get carer's allowance application. Once you've applied online, then you will receive your decision within 6 weeks period of time, and also you will be receiving carer's allowance on weekly basis. So sometimes people receive carer's allowance £67. It's not sufficient to meet that requirement. If you are receiving £67 or lower threshold, let me know and I will give you further assessment how you can meet adequate maintenance in terms of applying under this category. Because when we talk about adequate maintenance, which means that on certain amount of money you will need to show on every week basis that this is how much you are receiving, not only under carer's allowance, but also you can mix up this amount with other benefits, universal credit or part-time work, or if you have some saving, also you can combine with the savings. If you need any further information, you are looking at the screen with my contact number. You can also book a consultation and talk to me. So let's have a look if anybody wants to ask any question. Okay. So in the meantime, you can also contribute to this live session. Okay, so next thing is we are going to talk about let's have a look. Right, so we've spoken about the meeting 18,000 requirement. Now excuse me, what is adequate maintenance? Adequate maintenance means when you apply under this exemption, you will have to show how much weekly income you are receiving. For example, if you are receiving £67 or £57 as a carer's allowance, the rest of the amount, if you are two people without children, then you will need to show that you are meeting. Let me tell you, here is the important thing. You will not be able to find, you may not be able to find anywhere, but this is important. If you are two people, one is wife, one is husband, without children, then you will need to show at least minimum £125 per week, which means £600 per month, plus accommodation. So if you have accommodation provided by any third party, you will also need to enclose a consent letter from the third party as well as their passport copy. Also you will enclose their tenancy agreement or title deed to show that you are supported by the third party accommodation. You will also need to enclose your accommodation report, and accommodation report will show that that property is not overcrowded if the applicant comes in and joins you in that accommodation.
And if you have to pay the rent, obviously, then you will need to show rent amount on top of that £600. If your rent amount is £500, then you will need to show £1,100 per month in order to meet the eligibility criteria under this application. And if you have children living with you, so this is the third category, right? So first we've explained maintenance for couple, and second then we've explained maintenance plus accommodation rent you will need to show, and thirdly you will also be showing the children maintenance if children are living with you. If 2 children are living with you, then you will also need to show their maintenance, £125 for each week and £600 for the whole month for 2 children. So this is how much you will calculate. If you need further calculation, do let me know. I will help you in that. And then exactly, because this is just general information, anybody can have their particular situation for application. So अभी जो स्पाउस वीज़ा की हमने बात की है, उसमें अगर आप कैरियर्स अलाउंस पे हैं, डिसेबिलिटी अलाउंसेस पे हैं, या पेमेंट इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन के प्लान्स अलाउंस पे हैं, तो फिर आपको पिछले पूरे 1 साल का बैंक स्टेटमेंट से कोई एक बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी पड़ती है, और उसके अलावा आपको अपना जो DWP का लेटर है वो साथ शो करना पड़ता है. सो यू विल इनक्लोज 1 DWP लेटर एज एविडेंस, ऑल्सो 1 स्टेटमेंट from the last 12 months period of time. You don't have to enclose 12 months period bank statement. You can only show 1 statement from the period of last 12 months time. So ये तो थे कि डॉक्यूमेंट्स आप क्या दिखाएंगे और मेंटेनेंस आपकी कितनी होनी चाहिए. मेंटेनेंस जैसे मैंने बताया कि आपको रेंटल अमाउंट प्लस आपका £125 फॉर 2 पीपल, और अगर आपके 2 चिल्ड्रन हैं तो ऑन टॉप ऑफ दैट £125 उसमें ऐड करें एवरी वीक की बेसिस पे, और इसकी कैलकुलेशन करके आपको अपनी इनकम शो करनी होती है मेंटेनेंस के लिए, कि आप मेंटेन कर सकेंगे अपने कपल को विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स. आई थिंक इट डज मेक सेंस. इफ यू आर नॉट श्योर, आप कमेंट्स कर सकते हैं और यहाँ पर लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो हम अभी बात कर रहे हैं स्पाउस वीज़ा यूके, और स्पाउस वीज़ा यूके का जो अभी रिक्वायरमेंट है और एग्जम्पशन है फाइनेंशियल, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं और मेंटेनेंस कैसे आप पूरी कर सकते हैं. So this is free guide actually I have created for you to understand the concept of claiming financial exemption if you want to come and join your spouse in the United Kingdom. So another thing कि आपका जो spouse है, अगर वो ब्रिटिश नेशनल है या सेटल्ड है या फिर ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन में है या फिर रिफ्यूजी स्टेटस के साथ है, तो इसमें हर तरह की आपकी कैटेगरी उसमें इन्वॉल्व होती है. So here you see on the screen who are exempted from meeting the requirement. जैसे मैंने पहले बात की कि नंबर 1 पेज पे आ जाता है डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस अगर आप ले रहे हैं, सीवियर डिसेबलमेंट अलाउंस ले रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंजरी डिसेबलमेंट बेनिफिट ले रहे हैं, अटेंडेंस अलाउंस ले रहे हैं, केयरर्स अलाउंस ले रहे हैं, या फिर पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट ले रहे हैं. ये सारे लोग जो है वो एग्जम्प्टेड होते हैं रिक्वायरमेंट के लिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए. और एग्जम्पशन इसको अप्लाई कैसे एप्लीकेशन को करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप गवर्नमेंट www.gov.uk की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर ये स्पेसिफिक वर्ड्स टाइप करते हैं सर्च बॉक्स में. लेट्स सपोज लास्ट जो है पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो पूरा पेज आपको नज़र आ जाएगा. और अगर आप दूसरे कंट्रीज में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, दुबई में हैं, तो आप खुद भी उस वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हैं और अपने स्पाउस को उस सिलसिले में उनसे डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो कैसे क्लेम कर सकते हैं. क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को नहीं पता होता, people don't understand if they fall under this category. Sometime I have spoken to one of my clients and she actually
was eligible to apply under personal independent payment, but she wasn't sure how to apply, what's the process, how long will it take. Then I explained the procedure where she can get this advice from, how she can submit an application, and then she spoke to her social worker. Then she helped her to apply for personal independence payment application, और उसको जो है वो DWP से वो अलाउंस मिलना शुरू हो गया था। क्योंकि जब इसका क्राइटेरिया बेसिकली ये होता है कि जिस वक्त कोई पर्सन है, स्पाउस है आपका, वो इतना काम नहीं कर सकता कि अपना डे टू डे अपनी वॉशिंग कर सके, कुकिंग कर सके, उसकी इतनी मूवमेंट नहीं है कि वो अपनी लुक आफ्टर कर सके, और उसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उसको बैकएक है, उसके हेडेक इतनी है, कंसंट्रेशन नहीं होती, उसकी फिजिकल मूवमेंट इतनी नहीं है कि वो अपने सारे काम कर सके। सो दिस इज़ वेयर दे कैन असेस योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड दे कैन अवॉर्ड यू with personal independence payment allowances or benefit. Once you get proof of that, then you will be exempted from meeting £18,600 requirement as a spouse of British or settled person or person with refugee status in the United Kingdom. I hope you've understood the concept. How can you claim personal independence payment? How can you claim carer's allowance? Or if you are feeling you are facing any disability, then you can also claim disability allowance. Or if you are already claiming disability allowance, you may not know that you are exempted from meeting £18,600 requirement if your spouse wants to come and join you in the United Kingdom. Okay? So let me know if you need any further help. Okay, let's move on. So further, when we just look at, जिस तरह से मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि स्पाउस में कौन आते हैं, आपके स्पाउस, आपका पार्टनर, सिविल पार्टनर, or any person who has already got married but now they are divorced and they are married again, then they need to show, they need to prove their divorce certificate. Now I'm going to explain one most important thing here. Some people are confused from some countries. वो ये कहते हैं कि they have already been married to somebody and now this is their second marriage, but they do not want to divorce their first wife who is living, let's suppose, in Pakistan, because they have kids, they have children, and culture and their law does not allow them to divorce in this situation, और उनकी अपनी भी मर्जी नहीं होती कि डिवोर्स कर सके. So ऐसी सूरत हाल में जब आप अपने एक्स स्पाउस को, एक्स वाइफ को डिवोर्स नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, और पाकिस्तान आपको अलाउ करता है, you can have two marriages under certain conditions and you have met those conditions, such as obtaining consent from first wife, तो आप अगर नहीं भी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स करते, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्पाउस वीज़ा टू कम टू द यूनाइटेड किंगडम. बिकॉज आपके कल्चर में, आपके कंट्री में, पाकिस्तान में अलाउड है सेकंड वाइफ, तो यहाँ के जो यूनाइटेड किंगडम है, UKBA है वो, और जो इमिग्रेशन कवानीन है वो इस, और ह्यूमन राइट्स जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी अगर सेकंड मैरिज होगी है फॉर द पर्पसेस ऑफ your visa, then second marriage will be acceptable, not first marriage. ओनली इफेक्ट विल बी कि आप फर्स्ट जो वाइफ है उनको आप यहाँ पर एज ए स्पाउस कॉल नहीं कर सकते. इन फ्यूचर आप अपने जो पाकिस्तान में चिल्ड्रन हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फर्स्ट वाइफ है उनको कॉल नहीं कर सकते. बट फॉर द पर्पसेस ऑफ गेटिंग मैरिड एंड कमिंग टू द यूनाइटेड किंगडम एज ए स्पाउस ऑफ समबडी हु इज लिविंग एंड सेटल्ड हियर, you don't have to divorce your wife if she is in Pakistan and those countries or those culture allow you to have two wives. So ये थोड़ा सा उसमें था criteria, but again every person has got their own circumstances according to their own countries, because now people are watching from different countries, then different law will be applicable. If you need any further information, you will see contact number on the screen. You can book a consultation. Only serious clients will be allowed, because sometimes people are just sending me text message, I won't be able to
answer or give advice to non-serious people. I always ask, first of all, if they are genuinely seeking any help, or they are any their query is really concerning them, और वो कहीं से help नहीं ले सकते, तो फिर उनको हम help out करते हैं. So this was the important thing I wanted to show you, I wanted to share with you. So क्योंकि शादी के बारे में बहुत सारे लोगों को कंसर्न्स होता है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान से जो है वो बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि अगर वो पहले मैरिड हैं तो वो उनको डिवोर्स नहीं करना चाहते, तो क्या वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जी. अभी जो हमें देख रहे हैं कामरान चौधरी, हाय कामरान, हाय चौधरी राशिद, मुअज़्ज़म अली, अमानत अंजम, अली नफीस मलिक, सिद्दीक सालिया, असद खान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस. अमानत अंजम, थैंक यू सो मच. और शाहजहान अहमद पूछ रहे हैं एमनेस्टी के बारे में, एमनेस्टी कब आएगी? उसमें यह है कि बहुत सारे रूल्स ऑलरेडी इमिग्रेशन के चेंज हो चुके हैं. इमिग्रेशन के जैसे ऐसे कवानीन हैं कि जिसमें उनमें वर्क परमिट के लिए सहूलियात कर दी गई हैं, स्टडी वीज़े के लिए सहूलियात कर दी गई हैं, इसी तरह से बिजनेस वीज़े के लिए काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है, और उसके लिए इनकम टैक्स और बाकी चीज़ें काफ़ी प्रिविलेजेस दी जाएंगी उनको, उनके लिए काफ़ी हेल्प आउट कर दिया गया है. और हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, वे आउट होता है, टाइम होता है. अभी जब ब्रेक्जिट के बाद टाइम आएगा तो जितने भी लोग होंगे यूके से, सॉरी यूरोप से बाहर के जो कंट्रीज होंगे, उनकी एप्लीकेशंस को इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा वेलकम किया जाएगा. और जो फैमिली लाइफ के एप्लीकेशंस हैं उनको तो ऑलरेडी प्रायोरिटी दी जा रही है. ईच अखान, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड शुक्रिया आप लोगों का देखने का. अभी वो लोग जो देख रहे हैं उनके लिए फर्दर यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगी इन टर्म्स ऑफ यूके स्पाउस वीज़ा. सो अभी जिस तरह से हमने डिवोर्स की बात की है, तो डिवोर्स के सिलसिले में कि कुछ कंट्रीज अलाउ करते हैं, कुछ कंट्रीज अलाउ नहीं करते, राइट. सो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट. People are wondering if they do not meet English language requirement, is there any way forward to join their family members? So first of all, the first requirement is a SAFR A1 level. You have to do your SAFR A1 level requirement. But for any reason, if you cannot meet the English language requirement, for example your mental disability, your physical disability, ऐसे circumstances जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से आप नहीं कर सकते, या आप के पास ऐसी मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते, तो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. डॉक्टर का लेटर चाहिए जो डॉक्टर इस चीज़ को एक्सप्लेन करे कि वाई कांट शी और वाई कांट ही focus on learning new skills or English language. तो उनके जो authentic letters होते हैं, उनके लेटर हेड पे स्टैम्प होते हैं, तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं. तो इसलिए अगर आप ऐसी कोई प्रूफ और एविडेंस देते हैं और आपको जेन्युइन मसला है, एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, बिल्कुल आप इंग्लिश लैंग्वेज से एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं. उसके लिए आपका कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस का होना ज़रूरी है. और ये जो आपको EX1 नज़र आ रहा है, इट मीन्स के जब अपेंडिक्स FM को देखते हैं इमिग्रेशन रूल्स को, उसके अंदर जो पैराग्राफ है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को शो करते हैं, उसमें आपको insurmountable obstacles या serious hardship को शो करना होता है. और जब वो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए से प्रूफ करते हैं, जैसे मैंने कहा डॉक्टर्स का लेटर, साइकेट्रिस्ट का लेटर, या ऐसे कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के जिसकी वजह से आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है और आप फिर भी अपनी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, अब दोस्तों डिफरेंस क्या है यहाँ पर? डिफरेंस इज के अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं करके आते तो फिर आप इंस्टेड ऑफ 5 years रूट सेटलमेंट के आप 10 years रूट के सेटलमेंट पे चले जाएंगे. आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन तब मिलेगा जब आप 10 years लॉफुली यहाँ पर कंप्लीट करेंगे.
और अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज किया हो, विच आई ऑलवेज इनकरेज माई क्लाइंट्स टू डू इंग्लिश लैंग्वेज इफ यू कैन, बिकॉज दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ 5 years रूट। आप 5 years के बाद अपनी यहाँ पर सेटलमेंट और उसके बाद नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते, फिर भी आपके ह्यूमन राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में आते हैं, अपेंडिक्स EX1 में आते हैं, यू कैन क्लेम इंग्लिश लैंग्वेज एग्जम्पशन, बट यू विल स्टिल बी एबल टू कम एंड ज्वाइन योर फैमिली। Be mindful. It may not be that first time you will be able to get success in your application. आप इस तरह की application को first time, even if you get refusal, but there are chances of success in appeal. अपील में जो आपको है ना वो एग्जम्पशन उधर कंसीडर सकते, क्योंकि सम टाइम जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर हैं वो रबिश डिसीजन करते हैं, सम टाइम उनके जो ह्यूमन राइट्स नहीं भी कंसीडरेशन होते, तो फिर आपको राइट ऑफ अपील दिया जाता है, आपकी अपील में जाके सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। इफ यू कैन नॉट मीट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, देयर आर वेज फॉरवर्ड टू कम एंड जॉइन योर फैमिली। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, here is the thing, here is important thing. उससे पहले अभी ये देखें, मौसम कुरैशी है, उन्होंने कहा है you are doing a great job, congratulations. Thank you so much Mohsen Qureshi, and thank you so much for watching this live show. If you want to contribute your any of comment and queries, you can also contribute here. Okay, so जी यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है specified evidence list of documents, because these are the questions I have been asked for many times from the clients, which documents can be used. जब आप as a ये याद रखें कि carers allowance की application के documents separate हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे स्पाउस वीजा अप्लाई करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स सेपरेट है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे अप्लाई करते हैं देन यू विल हैव टू इनक्लोज अ सेपरेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड इफ यू आर अप्लाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कैश सेविंग देन you will need to provide a different set of documents. If you are relying on non-employment income, which means non-salaried income, जैसे रेंटल इनकम है आपकी, इस तरह के जॉइंट वेंचर के शेयर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, उसके लिए सेपरेट सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सो एवरी स्पाउस वीजा नीड्स टू हैव सेपरेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. दीज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन ओनली बी इनक्लोज्ड व्हेन यू आर सीकिंग एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम रिक्वायरमेंट एज ए स्पाउस ऑफ ए पर्सन हु इज क्लेमिंग कैरियर्स अलाउंस और डिसेबिलिटी अलाउंस और PIP. तो उनके लिए ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट डू आई मीन. सो उसके लिए आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, DWP का लेटर चाहिए, एक पिछले 12 मंथ्स में कोई भी एक लेटर हो, और बैंक स्टेटमेंट पिछले 12 महीने के अंदर, साल के अंदर की कोई एक भी बैंक स्टेटमेंट शोइंग पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बेनिफिट उसमें आ रही हो. उसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, आपका इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, और आपके जो अगर प्रीवियस यानी रिफ्यूज़ल हुआ हो तो उस रिफ्यूज़ल की कॉपी, TB टेस्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपीज फॉर योर स्पॉन्सर फॉर द एप्लीकेंट, any previous visa copy. Sometimes people have their just wait a minute. Sometimes people have got visas in third country and they are applying from there. For example, applicant is from India, but now he is in Saudi Arabia or he's in Dubai, and he wants to apply from there, but he has got the visa, valid visa or biometric or stamp from that country. In this situation, they must also provide the documents or visa documents from the third country where he or she wants to apply from. So this is most important. एक तो आपके होम कंट्री के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और एक आप जिस कंट्री में इस वक्त हैं वहाँ के भी डॉक्यूमेंट्स, वहाँ का प्रूफ ऑफ एड्रेस और आपके होम कंट्री का भी प्रूफ ऑफ एड्रेस, वहाँ के वीज़े की कॉपी, और एनी रिफ्यूज़ल, एनी क्रिमिनल कन्विक्शन रिकॉर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो आपको प्रोवाइड करनी होती है.
उसके अलावा आप टेनेंसी एग्रीमेंट, टाइटल डीड, अगर आपका अपना घर है तो टाइटल डीड, अदरवाइज टेनेंसी एग्रीमेंट और उसके साथ अकोमोडेशन रिपोर्ट लगेगी। अकोमोडेशन रिपोर्ट का मतलब होता है कि दिस प्रॉपर्टी इज सुटेबल एंड विल नॉट बी ओवरक्राउडेड and suitable to live in, and also if accommodation is being provided by the third party, any family friends or family members, then you will have to have the consent letter from them, their passport copy or ID copy, and their title deed or mortgage statement or tenancy agreement. If you require any further help in terms of template or drafts जो आपको चाहिए, तो वो आप बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो ड्राफ्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो एप्लीकेंट्स जो है, एप्लीकेंट्स के पेरेंट्स की डिटेल्स चाहिए होगी जो कि एप्लीकेशन में जाती है, उनके आईडी कार्ड विल बी फाइन कि आप उनके आईडी कार्ड दें, और उसमें उनके अगर आईडी कार्ड नहीं दे सकते तो उनकी प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, उनके फुल नेम वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बच्चे इन्वॉल्व है फैमिली में एप्लीकेशन में, देन बर्थ सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट की कॉपीज ऑफ एनी डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन फैमिली, उसके भी आप प्रोवाइड करेंगे। डज दिस मेक एनी सेंस? If it does make sense, say yes, yes, type yes, yes, so that you understand what I'm talking about. जी, अभी नेक्स्ट जो है इस सिलसिले में, अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं इसके क्या फ़ी है, क्या कॉस्ट है। स्पाउस वीजा एप्लीकेशन की जो फ़ी है आउटसाइड द यूनाइटेड किंगडम, इट्स 1527 पाउंड। हेल्थ सरचार्जेस नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 pound to 624 pound for 1 year, and when you apply then you will need to pay for at least for the 3 years period of time, which is going to be 1872 pound. Okay, और अगर आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन कर रहे हैं, सम टाइम पीपल कैन अप्लाई अंडर द ह्यूमन राइट्स ग्राउंड इफ दे कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पाउस वीजा और इमिग्रेशन रूल्स, एंड दे डू नॉट मीट financial requirement, they do not meet English language requirement, but still they can show what obstacles they are facing in their home country, or if the family must be united under this ground. If they want to apply under the human rights application, then instead of paying 1527 pound, they will be paying 400 pound. 400 pound will be their application fee under human rights ground. So if you are confused which application to go for, you can also consult with me. You will see the contact number on the screen, and this is available only on WhatsApp for you people. So अगर आप इनसाइड द यूके एप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पर जो लोग ओवरस्टेयर्स हैं, जो यहाँ पर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं लेकिन पार्टनर हैं, और या पार्टनर है या स्पाउस है, मतलब या अगर मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट, अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन किसी वजह से नहीं कर सके, या उनके साथ रहते हुए 2 साल का पीरियड ऑफ टाइम हो गया है और उनके पार्टनर हैं, या इस्लामिक मैरिज की है, इस्लामी निकाह किया है, उसमें भी पार्टनर के सिलसिले में एप्लीकेशन की जाएगी। और ऐसे लोग जो ब्रिटिश पर्सन के साथ शादी करके एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो उसकी फीस 1033 पाउंड होगी। Even good news is that people can claim fee waiver, which means they do not have to pay anything if they are living in the United Kingdom and their income is considered low income. They might be able to get fee waiver, and they do not have to pay any health surcharges. They do not have to pay any application fee. So next, let's move on to the next thing is procedure. Many people ask for procedure. What's the procedure of application? First of all, when you contact us or contact any lawyer of your choice, then they will assess your case. Assessment of your case is very important, whether your case can be qualified under financial exemption or not, whether your case can be qualified under English language exemption or not, whether your case can be filed under human rights application or under the immigration rules application, and vice versa, how much fee then you will have to pay. So this is called the assessment of your case. Also your proof of relationship, whether you should give divorce to your
ex-wife under your jurisdiction law or not. So this is called initial assessment and basic assessment. After assessing your case and how many children you have, dependent children, independent children, how many children your spouse have, all these information will be considered before giving you further advice upon your list of documents, because every person's case is different. Therefore all the documents will be differently required. So पहला assessment of case, दूसरा gathering relevant evidence at first stage. So there will be two stages. First stage में आपको relevant evidence वो देनी है जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही है, right? और उसके बाद फिर उसके अंदर आप अपने पेरेंट्स की डिटेल्स भी देंगे, स्पॉन्सर का नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी जो यूके में रह रहे हैं देंगे, और यहाँ का प्रूफ ऑफ एड्रेस, और उसके अलावा जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे. अगर प्रीवियसली डिवोर्स्ड है, do not be confused. You know, people living in the United Kingdom, they must have divorced their ex-spouse, otherwise their application will be refused. But people from Pakistan, because Pakistan allows 2 marriages, 3 marriages with certain condition, they can actually apply without giving divorce to their spouse. So again, you do not have to be confused between the two countries. Every country has their own law of land. You must follow their rules. Okay, so gathering relevant evidence, first stage evidence, you will provide whatever you've seen, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन होगी. फर्स्ट स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी टेम्पलेट्स होंगे, ड्राफ्ट्स होंगे, एक्स्ट्रा एविडेंस होगी, वो आपको एप्लीकेशन की सबमिशन के बाद प्रोवाइड की जाएगी. उससे पहले यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट. जब आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन हो जाएगी, फिर आपको टीबी टेस्ट की बुकिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद सेकंड स्टेज पे फाइनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी. और उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई आपका पहले मिस है अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसिस, देन दिस इज द बेस्ट स्टेज to provide you a chance to obtain that evidence from the authorities or from your relatives. So ये जो second stage list होगी, ये final consider की जाएगी. इसी से relevant आपने अपने documents इसी तरतीब से arrange करने हैं ताकि आप उसको biometric center में लेकर जा सकें. तो सेकेंड स्टेज की लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी फाइनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर यू. उसके बाद अगर आपके लॉयर काम कर रहे हैं या आप हमारे क्लाइंट हैं, तो आपका कवर लेटर विद लीगल ग्राउंड्स ड्राफ्ट किया जाएगा, जो कि बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगा, सच एज अगर कोई उसमें आपका लूप होल रह गया है, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं लीगल टर्म्स में, फैक्चुअल टर्म्स में, उसको आप एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दिस इज़ योर चांस टू मेक योर एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गर by writing legal grounds of your application. This is so important that sometimes people can avoid refusal, people can avoid paying too much fee for appeal process, and people can avoid for the further delay, which may be 9 months to 12 months time sometime if you go on to appeal process, unless until it's really urgent matter. सो लीगल ग्राउंड्स आपको बहुत सारी चीज़ों से सेव कर लेते हैं, आपके पैसे बच जाते हैं, आपका टाइम बच जाता है, और आप लीगल ग्राउंड्स में वो चीज़ें कवर करते हैं जो कि बाद में रिफ्यूज़ल आने के चांसेस होते हैं, वो आप पहले ही एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को समझा देते हैं. I hope you have not got bored क्योंकि it's really tough and technical points, but I have tried my best to make it so simple by creating these slides. And if you want to watch any further videos on my YouTube channel, UK Immigration के नाम से आपको channel जो है वो आप subscribe करें. So much free videos I've uploaded there for you people to understand the concept of spouse visa, not only spouse visa but also parents visas, domestic violence वीज़ा, सेटलमेंट एप्लीकेशन, नेशनैलिटी एप्लीकेशन, और आपके प्राइमरी केयर का वीज़ा, और जो स्पाउस
जैसे कि बाकी कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल अंडर एम्प्लॉयमेंट में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रोसीजर होगा, कैश सेविंग कितनी होनी चाहिए, जितनी भी सीरीज है वो सब आपको मिलेगी। तो यूके इमिग्रेशन के नाम से बैरिस्टर शाज़िया अंजुम ऑफिशियल आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे जो मेरा प्राइवेट इमिग्रेशन ग्रुप है वो भी यूके इमिग्रेशन के नाम से वो ग्रुप है, वो अगर आप ज्वाइन करें वहाँ पे भी आपको फ्री इंफॉर्मेशन और सम टाइम बहुत सारे ग्राउंड्स टेम्पलेट वहाँ पर आपको फ्री में अपलोड मिलेंगे जो आपको एक आइडिया देंगे कि किस तरह से अगर आप अपना केस खुद करना चाहे तो कैसे आप कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारे अपडेट्स और न्यूज़ और इस तरह जो एक टेम्पलेट होते हैं, कंसेंट लेटर्स, वो चीज़ें, लेटर्स फ्रॉम एम्प्लॉयर, जॉब ऑफर लेटर, वो आपको वहाँ से मिल सकते हैं। So, जब ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें तो नेक्स्ट आप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट पे जाएंगे। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट जब बुक करेंगे मेक श्योर कि उसका जो एक प्रिंटेड लेटर होता है जिसपे बार स्कैन कोड होता है वो अपने साथ लेकर जाएं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक आपको वीजा सेंटर से भी सेल्फ मिलती है, वो भी साथ लेकर जाएं। प्लस जो फाइनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तैयार की गई होगी उसको आप उसी तरह से अरेंज करके एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी के साथ अपने ओरिजिनल पासवर्ड के साथ ये डॉक्यूमेंट्स जो है वीजा एप्लीकेशन सेंटर में ले जाएं। वो स्कैन करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वापस दे देंगे, लेकिन आपका पासपोर्ट अपने पास रखेंगे। उसके बाद 6 वीक्स के बाद आपको आपका डिसीजन मिलेगा। इन द मीन टाइम यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट, यू डोंट हैव टू फॉलो टू मच टू यूके वीआई और योर solicitor or lawyer because it takes some time to get decision. The sooner we get your decision, we will let you know, or if your other lawyer is working, obviously it's their obligation to let you know. And after 6 weeks or 4 weeks, if you get your visa, then congratulations. This is end of the story. You will be able to come to the United Kingdom and join your family. And then you will receive your biometric card when you arrive in the United Kingdom. Because before you will only receive a stamped passport, and biometric card you will be collecting when you come to the UK. You will be collecting it from your nearest post office. और खुदा ना खास्ता any error होते हैं और decision में, any error in the decision, then you have 2 options, 2 choices. The first one, within 14 days or as soon as possible, I will say within 7 days, within 3 days. जो भी आप समझते हैं कि अगर उसमें सिंपल सा रिफ्यूजल है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो आपको साथ लगाना चाहिए था या आपने नहीं लगाया, और अगर आपने लगाया था तो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने, ECO ने उसको कंसीडर नहीं किया, ऐसी सूरत हाल में आप फौरन वो डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे, एक कवर लेटर लिखेंगे और एडमिन रिव्यू के लिए उनको ईमेल कर देंगे कि काइंडली ये डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाए या ये फैक्चुअल एरर है उसको करेक्ट किया जाए। ये एक चांस दिया जाता है ECO को आपके जो रिफ्यूज़ल है उसको करेक्ट करने का। तो अगर आपको दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपने अपील में जाना होता है, लेकिन आई विल एडवाइज टू फाइल एडमिन रिव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट इफ दे एक्सेप्ट इट देन यू डोंट हैव टू गो फॉर योर अपील। तो एक ये चांस लेना चाहिए फौरन। और अगर विद इन 28 डेज आपका जवाब नहीं आता एडमिन रिव्यू के लिए तो आप डोंट लीव इट फॉर टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली this is your interest. In the end you are going to lose your interest. So if your appeal is out of the time, then your appeal may not be accepted or will not be accepted by the court. So अगर आपका जो लीव टू जो एडमिन रिव्यू है उसका डिसीजन आ गया तो फिर तो ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, विच इज़ फाइन, यू डोंट हैव टू गो फॉर अपील। और अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, फर्दर उसमें एरर्स निकाल दिए हैं, तो फिर आपको जो फर्स्ट डिसीजन है वो भी और जो सेकंड डिसीजन है वो भी अपने ऑब्वियसली लॉयर्स तो आपका वही होगा उनके, लेकिन अगर कंसिडरेशन में नहीं है तो वो उनको कॉपी फॉरवर्ड करें। तो वो दोनों डिसीजन को सामने रखते हुए ग्राउंड्स बनाकर तो मेक श्योर कि आप जो इंस्ट्रक्शन है वो विद इन टाइम अपने लॉयर को दे दें। डोंट वेट अंटिल 28 डेज पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको एडमिन रिव्यू का जवाब जो है वो जब आपने फाइल किया 3 डेज के अंदर, उनको कहा कि आप विद इन उनको टाइम दे के विद इन 7 डेज का आइंडी आप हमें रिप्लाई करें। और अगर आप विद इन 14 डेज आपको कुछ नहीं उसका जवाब आता, डोंट वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स, दे आर नॉट obliged टू गिव यू एनी रिस्पॉन्स। इफ दे डू,
it's their greatness, but if they don't, then you must file your appeal in terms of achieving your success in appeal matters. Okay, does it make any sense? कि आपने एडमिन रिव्यू के लिए भेजा, फौरन भेजे, उसका आपने वेट किया, 14 डेज के अंदर आप, जब 14 दिन रह जाए, 2 वीक रह जाए, तो आप अपने लॉयर्स को इंस्ट्रक्शन दें कि अपील के लिए जाएं कि आपको एडमिन रिव्यू का जवाब नहीं आया. क्योंकि समटाइम लॉयर्स ऑल्सो नीड टू टेक सम टाइम टू प्रिपेयर योर ग्राउंड्स एंड अपील, तो एंड समटाइम लॉयर्स कैन बी बिजी, तो इसलिए बेटर है कि आप उनको वेल विद इन टाइम अपनी इंस्ट्रक्शन दें और उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखें. So this was it actually for UK spouse visa with carers allowance, जो आपको exemptions कैसे claim कर सकते हैं, even carers allowance की application कैसे कर सकते हैं, क्या process है, documents कौन से लगेंगे, cost कितने आएंगे, और ये सारा आपने देखा. नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जो स्पाउस वीज़ा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट के साथ, कैश सेविंग के साथ, इसके अलावा कोई और अपडेट होती है तो वो भी आपको उसमें मिलेंगी. इन द मीन टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग UK इमिग्रेशन वीडियोज़ फॉर योर UK इमिग्रेशन मैटर. अल्लाह हाफिज़.